मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल नेहा ठाकुर ऑफिशियल में। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सावन मास चला हुआ है और बहुत ही धार्मिक ये महीना माना जाता है, क्योंकि लोग जो है मंदिरों में जाते रहते हैं और भगवान की जो है हम पर बहुत असीम कृपा रहती है। तो हमने भी सोचा कि आज चलो कहीं जाया जाए और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और बीच में मैं आपको बताऊंगी चलते चलते कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और देखते हैं गाइस, आप जैसा कि मैं तैयार हो चुकी हूँ अभी, बस अभी थोड़ी देर में निकलूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, चलते हैं और देखिए आप कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो गाइस, अब जो है हम बस लेने के लिए जा रहे हैं और ये मंडी बस स्टैंड है। यहाँ पर हम अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से बस लेंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं, आज देख सकते हैं गाइस, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है घोड़े के ऊपर सवार होकर आए हैं ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। देख सकते हैं आप, सकते हैं ये हमारी बस आ चुकी है। अब हम इसमें जाएंगे और पहुंचने के बाद हम बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं। गाइस फाइनली जो है हम बस में बैठ चुके हैं और अब हम बस से जा रहे हैं। तो मैं आपको बाहर का व्यू बताती हूँ कि कैसा कैसा है यहाँ पर। तो चलिए गाइस, देखते हैं। गाइस, हम फाइनली न्यू चौक में पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाला रोड गया आपका सरकाघाट हमीरपुर के लिए और ये है सुंदरनगर शिमला चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा ये रामबाड़ी।
But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 देख सकते हैं पूरा
देख सकते हैं यहाँ पर जो है माता रानी का महामाया का जो मंदिर है। चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। ये देख सकते हैं आप माता रानी कितनी सुंदर तरीके से विराजमान है अंदर, और इनको देखने से कितनी खुशी हो रही है, और इनके दर्शन पाने से तो हम बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। इनका हमें बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है आज। और मंदिर में और बाकी भगवान भी विराजमान है, तो चलिए मैं आपको उनके दर्शन भी करवाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है भोले बाबा का जो है शिवलिंग है, और साथ में गौरी माँ भी विराजमान है। और ये देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में विराजमान हैं, और ये भी कितने सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मंदिर के जो ये गर्भगृह है यहाँ पर जाना है मना होता है, यहाँ पर केवल पंडित जी ही जा सकते हैं। और देख सकते हैं फिलहाल आप गाइस यहाँ की खास बात एक है कि यहाँ पर जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरुद्वारा भी साथ में ही है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी शांति यहाँ पर है, और ये हमारे गुरुद्वारा जी है। बहुत शांति यहाँ पर। पर शादी हो रही है और मंदिर में आए हैं दूल्हा दुल्हन पूजा करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन है, और ये बैंड बाजे वाले आए हैं। आप मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं फिलहाल, कितना सुंदर मंदिर। ये रहा महामाया माता जी का मंदिर, और ये जो मंदिर की बैक साइड है देख सकते हैं आप, कितना अच्छा मंदिर का नज़ारा है पिछली तरफ से भी। और ये देख सकते हैं आपको नीचे, ये सामने नीचे आपको सुंदरनगर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप, ये सुंदरनगर है यहाँ पर नीचे। और देख सकते हैं मंदिर कितनी शांत जगह पर है, और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ मंदिर में आकर। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है अब। और ये देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी की जा रही है फ़ोटो लेने के लिए। हमने खाने के लिए भी लाया है, और देख सकते हैं ये हमारी आलू की सब्जी है, ये इसने बनाई है। और ये हमारी रोटी है। तो बाहर खाने का मज़ा वैसे भी कुछ और ही होता है। देख सकते हैं आप, फिलहाल खाने में टेस्ट लग रही है। तो गाइस देख सकते हैं अब हम खाना खाने वाले हैं। अब खाना खाने के बाद मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ मैंने आते बार की वीडियो नहीं बनाई, हम घर पहुंच चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं अभी मेरे पीछे बारिश हो रही है, सो इसलिए मैं आते वक्त की वीडियो शूट नहीं कर पाई।
अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और एक बार ज़रूर आप भी वहाँ पर जाइएगा ज़रूर, आपको भी वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।